Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In this video, we will discuss the Physics Class 9, Chapter number 1 and the textbook exercise questions. डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकेडमी बाय अरूसा इरम। तो डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 80% MCQs या क्वेश्चंस आपकी बुक एक्सरसाइजेस से आते हैं। तो आप सबको चाहिए कि आप अपनी बुक एक्सरसाइज क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करें। तो हम चैप्टर नंबर 1 जैसा कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसके MCQs को देखते हैं। द फर्स्ट MCQ इज़ द नंबर ऑफ बेस यूनिट इन SIR। जब हमने चैप्टर को स्टडी किया था तो हमने टोटल 7 बेस यूनिट्स को स्टडी किया था। सो द ऑप्शन C इज़ करेक्ट विच इज़ 7। सेकेंड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। ड्राइव यूनिट कौन सा नहीं है, मीन्स इन सब में से बेस यूनिट कौन सा है आपने ये बताना है। सो किलोग्राम इज द बेस यूनिट, इट इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम एनी ऑफ other unit. So the option B is correct, which is kilogram. Third is the amount of substance in term of number is measured in. जब भी amount of substance को measure करना हो तो मोल को लिया जाता है एज अ यूनिट। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। फोर्थ इज एन इंटरवल ऑफ 200 microsecond is equivalent to, as you all know, माइक्रो एक प्रीफिक्स है तो इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁻⁶। व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इन द गिवन एक्सप्रेशन देन यू विल गेट 2 इंटू 10⁻²00 को आप स्प्लिट करेंगे 2 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, then you will subtract -6 plus 2, you will get the answer 2 into 10⁻⁻⁴ second. So the option C is correct. Fourth is which of the following is the smallest quantity। इन सब में से आपने बताना है कि सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है। नैनो जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है because its value is 10⁻⁻⁹. So the option D is correct, 5000 nanograms. 6 is which instrument is most suitable to measure the internal diameter of the test tube। टेस्ट ट्यूब के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर इज द मोस्ट प्रिसाइज्ड इंस्ट्रूमेंट। So the option B is correct. 7 is a student claimed the diameter of a wire is 1.032 centimeter using vernier caliper. Up to what extent do you agree with it? तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको इस वैल्यू को आप शॉर्ट फॉर्म में लेंगे तो ये आपके पास इसका ऑप्शन बनेगा C, 1.03 सेंटीमीटर। 8 इज अ मेजरिंग सिलेंडर इज यूज टू मेजर। मेजरिंग सिलेंडर का बेसिक पर्पस जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मेजर करना है। सो द ऑप्शन C इज करेक्ट। 9 is a student noted the thickness of a glass sheet using a screw gauge. On the main scale, it reads 3 divisions, while the 8 division on the circular scale coincide with the index line. Its thickness is, इसकी जो thickness है वो क्या होगी? 3 divisions जो हैं वो मेन स्केल के ऊपर हैं और वो coincide कर रही हैं सर्कुलर स्केल के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू जो है वो बनेगी 3.08 मिलीमीटर।
So the option C is correct. 10 is significant figures in an expression are. आपने अगर इसकी डेफिनेशन देखी हो प्रीवियस लेक्चर्स में, इस डेफिनेशन इज ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट. सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट. 11 is identify the base क्वांटिटी इन द फॉलोइंग. इन सब में बेस क्वांटिटी कौन सी है जो किसी और से मिलके नहीं बनी. डिस्टेंस इज द बेस क्वांटिटी. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, अब हम MCQs के बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस को देखते हैं. हमने चैप्टर नंबर 1 को कम्प्लीटली कवर कर लिया है. जिन स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स को नहीं देखा वो काइंडली लेक्चर्स को पहले सुने और उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी समझने में. तो हम इसका क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट, दैट इज़ 1.2. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेस क्वांटिटीज़ एंड द ड्राइव क्वांटिटीज़. गिव 3 एग्जांपल्स इन ईच. डियर स्टूडेंट्स, जब पेपर में आपके पास डिफरेंस पूछा जाता है दो क्वांटिटीज़ का, तो आपने सेंटर में एक लाइन लगानी है और हेडिंग लिखनी है जिन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आप डिफरेंस करने लगे. तो बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़ आपने हेडिंग लिखी. बेस क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? वो बेसिक क्वांटिटीज़ जिनको यूटिलाइज किया जाता है फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट, जो किसी और से मिलके नहीं बनी बल्कि वही सबसे बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, उन्हें कहा जाता है बेस क्वांटिटीज़. जबकि ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जिन में हम दो या दो से ज़ायद बेस क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड कराते हैं तो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी बनती है. So we will define the base quantity as the quantities on the basis of which other quantities are expressed are known as base quantities. Its example is length, mass, time. आपने just 3 एग्जाम्पल्स को बताना है तो आप 3 को ही मेंशन करें. What are drive quantities? Physical quantities which can be described in terms of base quantities are known as drive quantities. For example, force, area, volume. 1.3 is pick out the base unit in the following. यहाँ पे डिफरेंट जो हैं वो यूनिट्स दिए गए हैं, आपने इनमें से बेस यूनिट बताने हैं. लाइक जाउल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कूलम एंड वाट. तो इन सब में बेस यूनिट कौन से हैं जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें बेस यूनिट कहा जाता है. फ्रॉम ऑल दीज गिवन यूनिट ओनली किलोग्राम, mole, ampere, meter and Kelvin are the base unit because the kilogram is the unit of mass, mole is the unit of the quantity of substance, ampere is the unit of electric current, meter is the unit of length, Kelvin is the unit of temperature. Question number 1.4 is find the base quantities involved in each of the drive quantities. अब आपको 4 drive quantities given है, आपने इन सब quantities में बताना है कि कौन कौन सी base को use करके ये drive बनी है. तो dear students, आप इनके formulas को लिखेंगे और फिर देखेंगे कौन सी quantities इन्वॉल्व हैं और वही जो हैं वो बेस क्वांटिटीज़ होंगी. Now let's see. First is the speed. As we all know, speed formula is distance over time, and distance is measured is also measured in length over time. So the base quantities involved in the speed are length and time. And now we will see volume. Volume formula is length multiplied by width multiplied by height. Width and height can also be measured in lengths. So we can also say that length
multiply by length, multiply by length. So the base quantity only involved in the volume is the length. Now we will see this C part, which is force. As we know, force is equal to ma, mass, multiplied by acceleration, mass, and acceleration is derived from the formula change in velocity over time, and the change in velocity is also derived from distance over time multiplied by time. Now we will see the base quantities involved in the force are length, mass, and time. Now we will see the last part of this question, which is work. We know that work is work's formula is force multiplied by distance, and force is also equal to mass multiplied by acceleration, and acceleration is equal to the change in velocity over time, and change in velocity is also defined as distance over time. So the quantities which are base involved in the work are length, mass, and time. Now we will see the question number 1.5. Estimate your age in second. Let's suppose our present age is 15 years. Then we will multiply with number of days within year. It's mean 365 days. When we will multiply with 15 with 365 days, then we will get 5475. After splitting days into hours, we will multiply it with 24. Then we will further multiply it with 3600 second. Then we will get our final answer, which is on the screen. You can see that. Now we will see the question number 1.6. What role SI unit have played in the development of science? Dear students, एसआई यूनिट्स का क्या रोल है हमारी डेली लाइफ के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऐसा यूनिट बनाए गए थे, इनका बेसिक पर्पस यही था कि साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को जो है वो मोर प्रिसाइजली हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकें, उसमें कोई डाउट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी चीज़ को मेजर करने का यूनिट किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में कोई है, जबकि दूसरे कंट्री में उसी क्वांटिटी को मेजर करने का कोई और यूनिट था। तो इस तरह कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ऐसा यूनिट बनाए गए थे। So the answer is, with the development in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of unit was seriously felt all over the world, particularly to exchange the scientific and technical information. To fulfill this need, a worldwide system of measurement called International System of Units was adopted, which is also called as SI units. Now we will see the question number 1.7. What is meant by the Vernier constant? Vernier constant क्या होता है? जब difference between one small स्केल डिवीजन ऑन मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है उससे कहा जाता है वर्नियर कांस्टेंट। द डिफरेंस बिटवीन वन स्मॉल डिवीजन ऑन द मेन स्केल एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन is called a vernier constant. This is called the minimum length which can be measured accurately with the help of vernier caliper. That's why it is also known as the least count of vernier caliper. अब वर्नियर कांस्टेंट जो है वो लीस्ट काउंट का ही दूसरा नेम है। Now we will see the question number 1.8, which is, what do you understand by the zero error of a measuring instrument? Zero error क्या होता है, किसी भी measuring instrument में कैसे आता है? ये जो है, अगर measuring instrument के ऊपर wrong
जो है वो मार्किंग की हुई हो, या जो रीडिंग की जो लाइंस हैं वो एक स्पेसिफाइड फॉर्म के अंदर ना लगी हुई हों, आगे पीछे करके लगी हुई हों, तो उससे जो है वो हमें रीडिंग एक्यूरेट नहीं मिलती. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ज़ीरो एरर ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. सो द आंसर इज the error in a measuring instrument due to the non-uniform or wrongly marked graduation, due to which measurement may be less or greater than the actual measurement, is called the zero error of the measuring instrument. Now we will see the question number 1.9. What is the use of zero error necessary in measuring instrument? Zero error का क्या यूज है किसी भी measuring instrument के अंदर? डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग लेने से पहले पहले बेस्ट मेथड है कि आप उसका ज़ीरो एरर चेक कर लें. अगर आप उसको चेक कर लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि वो ज़ीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसके अंदर करेक्शन कर सकते हैं. अगर आप उस किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऐसे ही लेके बग़ैर चेक किए आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो उसके अंदर आपकी रीडिंग एक्यूरेट नहीं आ रही होती, तो आप परेशान हो जाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. So the best method is you should firstly note the zero error of any instrument which you are using. If the measuring instrument has zero error, reading taken by it will not be correct. By knowing the zero error first, necessary correction can be made to find the correct measurement. Such a correction is called a zero correction. Question number 1.10 is, what is the stopwatch? What is the least count of mechanical stopwatch you have used in the laboratories? अब स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच जो है मैंने आपको लेक्चर डिलीवर करते हुए भी बताया था कि स्टॉप वॉच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी लम्हे का दौरानिया बता सकता है. आप कितने देर जो है एक जगह से दूसरी जगह आप किसी स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन तक पहुंचना चाहते हैं तो आप उसका टाइम जो है आप बता सकते हैं कि आपको 5 मिनट्स लगे, 10 मिनट्स लगे. लेकिन आप के हाथ में अगर फॉर एग्जांपल बॉल है, आप उसको चेक करना चाहते हैं कि जब आप उसको हिट करेंगे ग्राउंड के साथ तो कितना टाइम लगेगा. इस चीज़ की मेजरमेंट के लिए बहुत कम टाइम जो है वो हम उसको मेजर करना चाहते हैं. तो ऐसा जब आप बॉल को गिराएंगे और वो जाके ग्राउंड को हिट करेगी, इतना कम टाइम आप एक क्लॉक, सिंपल क्लॉक या वॉच से नहीं देख सकते. तो उसके लिए एक और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पेश आई विच इज़ कॉल्ड अ स्टॉप वॉच. सो द आंसर इज़ an instrument used to measure the time interval or specific period of an event is known as the stopwatch. और अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट पूछा गया है. द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 1.11 इज, why do we need to measure extremely small interval of times? हमें क्यों ज़रूरत पेश आती है बहुत कम वक्त के दौरानिया को जो है मापने के लिए? क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हुए मोर एक्यूरेट एंड प्रिसाइज्ड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की ज़रूरत होती है. सो द आंसर इज़, we need to measure extremely small interval of time to get accurate and error-free results of the experiments. Question number 1.12 is, what is meant by significant figures of a measurement? This is just a simple definition. In any measurement, all the accurately known digit and the first doubtful digits are known as significant figures.
Question number 1.13, which is the last question of your chapter number 1 physics book. How is precision related to the significant figures in a measured quantity? जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी भी रीडिंग में, इट्स मीन इट इज़ मोर प्रिसाइज्ड, इट हैज़ मोर प्रिसीजन. So, our answer is an improvement in the quality of measurement by using the better instrument increases the significant figures in the measured result. More significant figure means greater precision. For example, measurement of vernier caliper would be more precise than a meter rule. Therefore, measurements taken by the vernier caliper would have more significant figure than that taken by the meter rule. डियर स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके फिज़िक्स क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज, जिसमें एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस थे. Inshallah, in the next video, I'll also discuss the numerical problems of the chapter number 1. Dear students, I hope you all like my video. If you like my video, then kindly do like, share, comment and subscribe to my channel, which is Quick Learn Academy by Arusairam. And thank you so much for listening me.